Hello, my dear friends. Welcome to the episode number 23, Monday Nights with Mohit. And today we have a very special guest. You can see it on my right side, Narendra Modi sir. Namaskara. so, I think you might have already seen this video on YouTube and some of the news channels that, Narendra Modi, our Prime Minister, had invited all these Thomas Cup champions, the world champions, team games world champions, badminton, to his residence, and then he greeted them, he motivated them, he acknowledged what kind of achievement they have done. So it was fantastic to know that a prime minister, the country's prime minister, अरे भाई देश को संभालना है उनको, पर फिर भी थोड़ी बहुत कुछ समय बिता के अपने प्लेयर्स को या हमारे खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साह करते हैं. आई मीन, आई सैल्यूट माय पीएम एंड आई लव माय पीएम a lot. I could only say Bharat Mata ki jai. So how are you guys? So how is it feeling? How's the Monday going on? So our first guest is none other than Disha. Hello Disha, how are you doing? How was your Monday? I hope all of you are doing good. So today's episode is little special, I would say, because the kind of words our PM has used is amazing. No other PM can do that. I think it was fantastic. The moment I was analyzing about his words, keywords which he used, and particularly you will see that we both will analyze, we all will analyze how he was using those words to motivate, and what he actually meant. Certain things, like, you guys really don't know. I mean, he was addressing all these players because all players are very young, less than 25, 26, and he was addressing that, you guys don't know what kind of championship you have won. He was also mentioning that, how much inspired a whole lot of generation, the next upcoming generation would be, because of your achievement. He was saying that, and I was literally in my tears. Sarvesh Pandey, hello sir, I loved Lakshya Sen interview. Please do bring more players in your YouTube channel. Absolutely, this is what I'm looking for. I want this feedback from you all. What kind of things you want to hear about, what kind of things you want to see on my channel, so that we can do that. Definitely, we'll bring people. I'll bring people. Also, all sort of people, like, who are important to our badminton industry and sport industry. And I will also, once I reach out around 30 shows, I will also reach out to a couple of legends from different sports, so that we can even learn one or two things from them. That's enough. It's not only about, badminton. It's also, there are a few things which we can learn from badminton and sports, which could help us to bring a prosperous life. When I say prosperous, it's not money only. It's health, it's mental health, it's relationships, it's so many things in terms of communication. So many things are there, right? So these are all life skills. So Disha, yes, fantastic. Amit Gowda, hey, how are you guys doing? So we'll wait for another 3 minutes for people to join, and then we can dive into our session today. And also, these players, when they were sitting in the hall, excuse me. So when they were sitting in the hall, and all of them were so immersed in what our prime minister was saying, and I think that could be one of the most beautiful moment in their life. It could be any time, even if they win loads of medals. I think at that particular time, when a prime minister is motivating you, and he is telling you that, how beautiful life will be once you keep, progressing, and you keep winning these championships. There is no end for it. He literally mentioned that, don't think that, वो जो विजय है सर पे चढ़ने मत देना, which means, don't let victory go on your head. Keep working. And he mentioned that, I mean, I really feel, I really felt happy and contented when he said that. So smile. Yes, Disha sir, how was your Monday? Monday was good.
Especially Saturday and Sunday was good. I went through a lot of new concepts and new skills I got to learn. You know, it was fantastic, and there were three different skills I learned. This is something I will not share because I want to keep it secret. Once it comes out, then I feel that you will it'll blow your mind. So three different skills I got to do it. Especially Saturday was something which I had to be awake till 4 o'clock, because in US that's the time it is in the evening time, and it's morning for us and couple of special people. I was taking some lessons from those special people, and I had to be awake till 4. And I think twice I just dozed off, and he was like, "Hey, Mohit, is there something wrong?" But I was not telling him that it's 4 a.m. So it was good. Hey, Amit, good sir, always excited for Monday's life. Oh, that's good. I hope it is honest. Sarvesh Pandey, sir, you should do one episode with Abhijit Kulkarni, sir. Yes, and that's a great feedback. And by the way, those who don't know who is Abhijit Kulkarni, he is one of the key person to spread good things about badminton in as a reporter, right? I am not sure. I think it's Deccan Herald or Times of India. I'm not sure, Sarvesh. If you can help us know who is he, that'll be great. But he was a good reporter at our times. He would definitely give some good perspective about badminton, the growth, the progress, and all. Right. So we will wait for one more minute, and we will start our show. And Thailand Open. I think Sindhu played semifinals in the Thailand Open. Right. They're playing. If you can see, right, I have been noticing. I had been playing in this international circuit. When I was there in the international tournament, we could see one or two sudden wins in a span of 3 months and 4 months. And now if you see, every tournament there is a result. Every tournament there is a result, and there will be a time, mark my words, that every tournament there will be two or three medals, guarantee. That will be the time. I think in less than 5 years we can see that, and we can be the next superpower. Yep. Okay, so let's start our show, because this is something very close to my heart, because I love my prime minister. He is one of the role model for not only for Indians but also for many leaders across the world. The way he had handled, which I see, the way he has handled the country, the way he has handled emotions and people during the COVID times. I think nobody has done that, and he is a role model. He is fantastic. I love my PM. So today we have 4 to 5 different videos of Narendra Modi ji, our Prime Minister, interacting with a couple of players and asking certain questions. And once we finish that video, we will come back and we will discuss, and we will see what we can learn from that video. Okay, I will give my perspective, and I want you also to be engaged and involved, so that you also share your views on that, so that I will learn on that. Okay, so let's go with our first video. I can very proudly say that no other athlete in the world can boast about this, sir. Only we have this privilege of talking to you immediately after the match. अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर, मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा और वो आज लेकर के आया। मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, वो फ़ोन कॉल के बाद भी। और जब भी आप मिलते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूँ और आपसे मिलता रहूँ और बाल मिठाई लाता रहूँ।
गुड इवनिंग सर। हाँ श्रीकांत बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया है सर। एंड आई कैन वेरी प्राउडली से दैट नो अदर एथलीट इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट अबाउट दिस सर। ओनली वी हैव दिस privilege of talking to you immediately after the match. अच्छा श्रीकांत ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है। अब तुम्हें कप्तान बनाया गया, अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर। बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है और हम सब एक होके खेलना है और एंड तक फाइट करना है सर। इतना बस एक छोटा छोटा चीज़ है सर जो हम सारे प्लेयर्स मिलके डिस्कस करके बस ये करना पड़ा सर। बस मुझे कैप्टन होके इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ा सर क्योंकि सब अपना अपना ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर। नहीं सबने खेला तो है, लेकिन ये मामूली काम नहीं था जी। आप भले सरलता से बताए हो, क्योंकि एक स्टेज आने के बाद जब लग रहा है कि सामने है मामला, जब लास्ट ओवर में क्रिकेट में कैप्टन की बड़ी सबसे ज़्यादा कसौटी हो जाती है, तो आपके दबाव तो रहा होगा सर। मतलब बहुत एक प्रिविलेज है सर मेरे को फाइनल में वो पूरा मैच लास्ट डिसाइडर विनिंग मोमेंट मैं एक्चुअली खेल पाया सर। जो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन टीम के लिए फाइनल्स में, वो एक्चुअली मेरे को एक प्रिविलेज है करके मैं सोचता हूँ सर। और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए और मैंने बस ये सोचा कि मैंने पूरा एफर्ट लगा के मेरा बेस्ट बैडमिंटन खेलना चाहता था। और मैं बस कोर्ट में जिस समय मैं कोर्ट में उतरा बस ये सोचा कि मैं 100% खेलना है और बेस्ट बैडमिंटन खेलना है। अच्छा, आप विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं और अभी आपने थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीता है। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि हर सफलता की अपनी एक विशेषता होती है, फिर भी जैसे पत्रकारों का आदत होती है वैसा सवाल मैं अगर पूछूं, इन दोनों में से किस चीज़ को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? सर ये दोनों मेरा ड्रीम्स है सर कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। क्योंकि वो एवरी प्लेयर का एक ड्रीम होता है सर कि वर्ल्ड में बेस्ट बनना है। और थॉमस कप ऐसा टूर्नामेंट है जो टीम 10 लोग मिलके एक टीम जैसे बन के खेलना है। ये एक ड्रीम है सर क्योंकि इसके पहले इंडिया थॉमस कप में कभी हम मेडल भी नहीं जीता है सर। और हमको इस साल ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था क्योंकि हम सब अच्छे खेल रहे थे। तो ये दोनों ड्रीम है सर और दोनों फुलफिल हुआ सर मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फ़ोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में 4-6 घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अच्छा श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक खिलाड़ी के तौर पर और उसमें भी एक कप्तान के तौर पर लास्ट मोमेंट इतना प्रेशर रहा होगा इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूँ। लेकिन बड़े धैर्य के साथ पूरी टीम को साथ लेकर के आपने जो देश को गौरव दिलाया है, मैं आपको फिर से एक बार टेलीफोन पर तो बधाई दी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार रूबरू में बधाई दे करके खुद आनंद ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Oh, isn't it awesome?
look at him, how he's expressing the gratitude, being a Narendra Modi, being the prime minister of our country, how he was saying, आपको मैं देश के साथ, देश के देशवासियों के तौर से भी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत साल दशकों बाद, which means like tens of years of uh, behind, we have won this tournament. छोटी चीज नहीं है ये. And how he was motivating, no. So there are two things which I felt, I could share this with you. So the first one, which our prime minister asked Shrikant, that in badminton there is nothing called captainship, only during the team matches, but that is not practiced all the time, right? It's an individual sport. You go, you play, you have you can take that pressure, or maybe certain situations you could have that pressure, but there is no such thing where you handle your team all the time. So if you play in a year 15 tournaments, I think one or maximum two tournaments you could play for your state or nationals. The percentage is somewhere between 20 and 80, but still that captainship comes with a very different quality. So our Prime Minister Ji said that, how did you handle this responsibility? I think he directed the question towards the finals, the Thomas Cup finals during beating Indonesia. How did you handle your responsibility and pressure at that moment? कैसे आपको फील हुआ रहेगा? That's a fantastic question, no? I really felt nice on that question, because that pressure is what something we will have to, as a player, we will have to overcome. Crores of people watching from different parts of the country, and you will have that feeling ki everything is on your decision making. How will you handle that? That comes. I think last time when Lakshya Sen was here, he mentioned that he had started that mental training very early, right? So that something helped him. So maybe for Srikanth, in my perspective, that I have seen I have played with Srikanth, and then Pranoy, and I was there when they were upcoming and they were progressing as juniors. Then they transited to seniors and all. Every match I've seen them putting the same and more effort every match. And if they could do that in every match, I think even in practice sessions they were able to do that, give that 100 or more than 100%. So that's, I think that's the key, and that allows you to exercise your thoughts, exercise your emotions during various situations, especially in pressure situations. And he has been world number one. He has been countering so many past 6 to 7 years of world class badminton. I think that will come. But I think the question was beautiful, and the answer also was very diplomatic, but good. He answered that, everybody focused on their own strengths, and they could win and get 1 point. That made a lot of difference, right? So the second one was, this was a very tricky question. He also mentioned patarkar jaise main पूछूंगा, which means like a reporter. I'll ask you, which one do you choose? The world number one title, the world number one ranking, or is it the team world badminton championship which you have won? That was a very tricky question. Which was most important for you? That's what Narendra Modi sir said. And what do you think? If you were a world champion and team world champ, and you have won the team world championship, which one do you see that which is more important to you? I will answer my question. I'll answer that thing from my side. Come on, comment and let me know. It's fun. Sarvesh Pandey, sir, do you coach at PPBA? No, I don't coach at PPBA. I have my own academy called Mohit Kamath High Performance Badminton, and that's in Bangalore, couple of locations. Yes, I'm waiting for your comments. Or what do you think? I'll repeat that again. World number one ranking, or Thomas Cup? Which one do you think is the most important? Oh, we have Arav and Manisha. Hello, how are you doing? How was your Monday? Oh, I have a first answer, Mr. Amit. World number one. Wow, that's a good answer. But why world number one? Why not a team world championship where you can say that you were responsible to get it for the whole country. As a country, you made your Indian flag
fly high when the whole world was, watching at that time? Why not through the country's point? My answer is, I would say, definitely World Badminton Championships, because I'm a team player, and I love to contribute maximum to my team so that everybody wins. That's something which I have recently in the sense, couple of years back, I have started learning, because the sport itself teaches you to involve so much involve in yourself, that I because this is an individual sport, right? But also it is important to, to break that I once you are done, and look beyond that I and have that we concept. How will you help each other, looking around your people? That's something which, really excites me. It's personal, individual. I respect your opinion, Amit. Nothing, no offense on that. But that's a great answer. Yeah, we have Sarvesh Pandey also saying Thomas Cup. Good one. Thomas Cup and any day, because Srikanth was world number one for just 1 week. That's a brilliant answer, Sarvesh Pandey. And this will be forever, for at least 1 year, 2 year, right? Twice, 2 years, 2 years once. So 2 years we are here. But I think world number one you can also be for more, if you're very good enough, like how 257 weeks streak, Lee Chong Wei was world number one. I think it's an individual choice. I get it, but I feel that my country is much much bigger than myself, so that's how it could be. But I respect your opinions, no problem. So moving on, we can move to the second video. Okay, there we go. जरा खेल के विषय में बताइए, अपना अनुभव बताइए। डेफिनेटली पिछले 10 दिन बहुत मेमोरेबल था सर लाइफ में। जैसे हम ऑन कोर्ट पे गया, ऑफ कोर्ट में भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था पूरा टीम, बहुत मेमोरेबल था, बहुत सपोर्ट मिला सपोर्ट स्टाफ से, और इधर से इंडिया से भी बहुत सपोर्ट मिला था, और बहुत अच्छा लगा सर पिछले दिन। अभी भी हम लोग उधर ही थाईलैंड में ही हैं अभी भी। हम बॉडी इधर है लेकिन माइंड उधर ही, लास्ट पॉइंट में जैसे श्रीकांत भाई जीता, आग पे ही है सर अभी भी, तो हम वो मोमेंट स्टिल एंजॉय कर रहे हैं सर। रात में कैप्टन डांटता हुआ दिखता होगा। फाइनल्स के बाद सब लोग मेडल पहन के ही सोए सर, कोई उतारा नहीं। मैंने किसी का ट्वीट देखा, सर प्रणय का देखा, प्रणय को लेकर के बैठा है और कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा, खेलने के बाद आप वीडियो देख करके क्या कमी रही वेरीफाई कर लेते हैं? हाँ सर, दोनों मिलके। हाँ, कोच के साथ बैठ के मैच के पहले कल किसके साथ खेल रहे हैं उनका गेम पूरा एनालाइज करके जाते सर। चलिए सात्विक, आपकी सफलता ने ना सिर्फ ये साबित किया है कि आपके कोच सही थे, बल्कि ये भी साबित किया है कि आप स्वयं में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और अच्छा खिलाड़ी वो है जो अपने आप को खेल की जरूरत के हिसाब से तैयार करता है, उसमें ढालता है, बदलाव है तो स्वीकार करता है, तभी तो प्राप्त कर सकता है। और आपने उस बदलाव को स्वीकार किया, अपने आप को ग्रो करने के लिए जो भी जरूरत थी, और आज का परिणाम है कि आज देश को गर्व हो रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आगे बहुत कुछ करना है, रुकना नहीं है, इतनी ही शक्ति के साथ जुटे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चिराग शेट्टी। देखो चिराग, सात्विक ने तुम्हारी तारीफ बहुत कर दी है। सर नमस्ते सर। पहली बात आई थिंक सर मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर हम आए थे यहाँ पर, आपने हमको ओलंपिक्स के बाद बुलाया था, 120 एथलीट्स थे और सभी को आपने अपने घर पे बुलाया था। जो मेडल नहीं जीते थे वो भी आए थे यहाँ पर, तो हमें काफ़ी दुख था तभी कि हम मेडल जीत नहीं पाए अपने देश के लिए। बट अभी इस बार जब भी हम थॉमस कप गए थे, हमें एक ये था कि जुनून था, कि एक जज्बा था, पता नहीं क्या था, बट कुछ तो करके एक मेडल तो पक्का लेके आना है। और शायद ही हमने सोचा होगा कि गोल्ड होगा, बट मेडल तो सोचा ही था। तो आई थिंक इससे बड़ी खुशी हम अपने देश के लिए कुछ नहीं दे सकते सर। और मैं वही एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर। देखिए, आप लोग आए थे उस समय, उसमें से मैं देख रहा था कुछ लोगों के चेहरे बहुत लटके हुए थे,
और आपके मन में ये था कि देखिए हम मेडल के बिना आ गए, लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि आपका वहाँ पहुँचना वो भी अपना एक मेडल है। मैंने उस दिन कहा था, और आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक पराजय पराजय नहीं होता है। जिंदगी में जीत के लिए बस हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। जीत कदम चूमने के लिए कभी कभी सामने चली आकर के खड़ी हो जाती है, और आपने करके दिखाया है। अच्छा चिराग, मैंने सात्विक को तो पूछा, उसने बता भी दिया, लेकिन आप दोनों की जोड़ी, और मुझे मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक में आपके मन में एक उदासीनता थी, लेकिन आज आपने उसको ब्याज समेत भरपाई कर दिया, देश की शान को और बढ़ा दिया, और एक टीम के तौर पर आप लोगों ने प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि अपने आप में, लेकिन जब, क्योंकि ओलंपिक में निराशा का दिन कोई ज़्यादा दिन नहीं गए हैं, इतने कम समय में वो कौन सा जज्बा था कि आप विजय प्राप्त करके फिर से लौटे हैं? क्या कारण हुआ? सर मेनली था कि हमें ओलंपिक्स में, जैसे मैंने बोला कि हमको बहुत काफ़ी दुख था, क्योंकि हमने जिसको हराया वो इवेंचुअली जाके गोल्ड मेडल जीता, और हमसे ही हारे थे उन लोग एक ही गेम, बाकी किसी से हारे नहीं थे उसके बाद। तो इस बार कुछ उल्टा हुआ, हम उनसे हारे प्री क्वार्टर फाइनल ग्रुप स्टेज में, और हम जाके वहाँ पर गोल्ड जीत गए। तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। वो किस्मत का खेल कही है या कुछ कही है, बट मतलब हमें लिटरली कुछ अलग ही जोश आ गया कि कुछ तो कुछ करना है। और ये सिर्फ मेरे में नहीं, हम 10 लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पर, कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, हम एक साथ थे। और मुझे लगता है ये 10 लोग हमारी भारत की जनसंख्या को एक्चुअली दिखाता है कि कुछ भी हम लोग फाइट बैक करेंगे। वाह! देखिए चिराग, आपको और पूरी टीम को मैं कहूँगा, और भी बहुत मेडल लाने हैं, और बहुत खेलना है, बहुत खिलना भी है, और देश को खेल की दुनिया में खींच के ले भी जाना है, क्योंकि अब भारत पीछे नहीं रह सकता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो एक के बाद एक विजय प्राप्त कर रहे हैं, देश की आने वाली पीढ़ी को खेल के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप, और ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं दोस्त। नमस्ते सर, थैंक यू। So here we saw Satvik is really funny. He's a funny guy. We were saying we are still in the hangover in of Thailand. We are still आके सामने है कि हम लोग अभी भी याद करते हैं कि वो मोमेंट जो श्रीकांत जीत के उछल रहा था, हम लोग वहीं पे है. I think that happens. That happens when you train so hard day in and day out. You you give everything, you sacrifice so many things in your life, especially at that teenage, and then the early 20s and late 20s, for this moment. You have lived your life in a very tough way, and you get that fruit at that particular time. This really happens, you burst out. And also, he was mentioning Pranoy did not sleep, properly. They were saying neend nahi aa raha hai. That really happens because you were having the dream for so long, and that day is finally there, and it's not a dream anymore. It's reality. How do you feel? Fantastic, right? It was awesome. So we have a special guest, Ses Talavey. Hi, first time catching a show. Very welcome to Monday Nights with Mohit. I hope to see you always on my show. And if you have not subscribed, please subscribe. So fantastic. I really welcome to the show. Yeah, so that was this one. And I think our prime minister also mentioned, how as a team you came across such situation. And that was a fantastic answer even by Satvik as well as Chirag too. कुछ ना कुछ करना ही है हम लोग अपना. If we see our own selves, our own strength, but we will individually contribute, and we will do something. The citizens, for the whole citizens of India, we will show them, we will not leave, we will fight back. That was the very good key message. Let's go for the third video.
सेन। चलिए, लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। सेन। चलिए, लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा और वो आज लेकर के आया तो उसने याद रखा। हाँ, लक्ष्य बताइए। जी नमस्ते सर। मैं जैसे मैं यूथ ओलंपिक में जब मैं मेडल जीता था तब मैं आपसे मिला था और आज दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही और मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं वो फ़ोन कॉल के बाद भी। और जब भी आप मिलते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूँ और आपसे मिलता रहूँ और बाल मिठाई लाता रहूँ। अच्छा लक्ष्य, मुझे बताया गया कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था वहाँ। जी सर, जब हम पहुँचे थे जिस दिन उस दिन मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो मैं 2 दिन के लिए नहीं खेल पाया था। बट फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जब ग्रुप स्टेज के मैचेस स्टार्ट हुए तब तक थोड़ा बेटर फील कर रहा था, तो फिर एक मैच खेला था और फिर एक मैच में फिर से रेस्ट किया था ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। नहीं, कुछ भी खाने की आदत है कि क्या है? नहीं सर, वो एयरपोर्ट पे कुछ गलत खा लिया था शायद उस दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट खराब हो गया था। बट बाकी के जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो मैं और दिन भर मतलब एक के बाद एक दिन बेटर फील करता जा रहा था। आज देश में छोटे छोटे बच्चों का भी मन करता है हमें जाना है, जी तो 8-10 साल के बच्चों के लिए तुम्हारा क्या संदेश रहेगा? जी, जैसे कि मैं आपने विमल सर ने कहा कि मैं काफ़ी शरारती था और काफ़ी शरारत करता था, तो मैं खुद से तो ये कहना चाहूँगा कि मैं अगर थोड़ा कम शरारत करता और खेलने पे ध्यान देता तो ज़्यादा अच्छा था। बट बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जो भी काम करें दिल से करें और अपना पूरा ध्यान लगा के काम करें। फूड पॉइजनिंग होने के बाद फिजिकल तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मानसिक तकलीफ तुम्हें बहुत हुई होगी, क्योंकि खेल चलता हो, शरीर साथ न देता हो। उस समय तुमने जो बैलेंस रखा होगा ना, कभी आराम से सोचना कि वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ट्रेनिंग थी कि फूड पॉइजनिंग के कारण, फिजिकल वीकनेस के बावजूद भी खेल तुम्हें चैन से बैठना नहीं देता था और तुम फूड पॉइजनिंग की स्थिति को भी पार करके आए। उस पल को एक बार फिर से याद करना, तुम्हारी बहुत बड़ी वो ताकत होगी, तुमने किया होगा। 10 लोगों ने कहा होगा चिंता मत करो, सब हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक ताकत होगी। और मैं समझता हूँ कि, और दूसरा, ये तुम्हारा जो नटखटपन है ना, छोड़ो मत इसको, वो तुम्हारी जिंदगी की एक ताकत भी है, उसे जियो, मस्ती से जियो। चलिए, बहुत बहुत बधाई। प्रणय बताइए। मैंने सही कहा ना? तुम्हारा ही ट्वीट था ना? हाँ सर, मेरा ही ट्वीट था सर। Sir, it's been a very happy moment for all of us because we won the Thomas Cup after 73 years. And I think even more proud moment because we could win it for a country on our 75th year of independence. So I think that's a great gift for the country and I'm really happy. अच्छा प्रणय, मलेशिया, डेनमार्क, ऐसी ऐसी टीमें और उसके खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में निर्णायक मैचों में जीतने का दारोमदार, और मैं समझता हूँ कि समय सबकी नजर प्रणय पर होगी, क्या रहा होगा? उस प्रेशर में कैसे अपने आप को संभाला और कैसे एग्रेसिवली रिजल्ट दिया? सर काफ़ी ज़्यादा ही प्रेशर था सर उस दिन, स्पेशली क्वार्टर फाइनल्स के दिन, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये मैच हार जाऊंगा तो हमको मेडल नहीं मिलेगा और हम लोग विदाउट मेडल वापस आना पड़ेगा। बट वो जो टीम का जो स्पिरिट था सर एंटायर टूर्नामेंट में और सभी का जो जोश था कि ये कुछ तो भी करके हमको मेडल लेके जाना ही है, वो स्टार्टिंग दिन से काफ़ी एनर्जी दे रहा था सर एंटायर स्क्वाड को। एंड जब कोर्ट स्पेशली कोर्ट के अंदर जाने के बाद एक 10 मिनट के बाद मुझे लगा कि आज तो कुछ भी करके जीतना ही है। एंड आई थिंक सेमीफाइनल में भी सेम सिचुएशन था सर, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम लोग फाइनल्स पहुंच गए तो हम लोग
ये गोल्ड लेके आ सकते हैं। तो मुझे वो जीतना ही था सर, और एंटायर टीम के लिए सर थैंक यू, बिकॉज वो लोग उधर थे सपोर्ट के लिए और बहुत ज़्यादा ही एनर्जी दिया वो लोग, तो कुछ तो करके जीत। देखिए प्रणय, मैं देख रहा हूँ आप एक योद्धा है। खेल से भी ज्यादा आपके भीतर के अंदर जो एक विक्ट्री का मिजाज है ना, वो सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत है। और शायद जो तुम शरीर की परवाह किए बिना इंजरी हो जाए जो भी हो कर लूँगा, वो उसी का परिणाम है, क्योंकि भीतर एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी है और जज्बा भी है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत जज्बा और ऊर्जा. Awesome, right? So emotions. There is a key thing which I really want to stress upon right now. Um, Hello, I hope I'm very clear. Please give me a thumbs up if you are able to listen me clearly. Where he mentioned, for Lakshya Sen, he had this food poisoning. Lakshya mentioned that, he had something, he had I think, some ulta pulta food in the airport. But he mentioned that even in spite of that, you were able to deliver a fantastic game that day. What could be that? And even our PM sir said that, कभी आराम से बैठ के सोचना, which means they call this as reflection is a fantastic tool for you to analyze what went through, how did it happen, how did I respond to certain situations, that really digs inside yourself. So as personality, right, so there will be three layers. The first layer will be very very core, inner core. So like when you're born, obviously you don't remember the first fourth month when you were born, what kind of dress you would have worn. Maybe your mom remembers, but you will not remember because your memory structure would have not born. So it will take, as science says, that it will almost take 7 to 12 years to form that first core personality of how you think, what kind of personality you have, how you operate, what's your decision making skills, and XYZ things are there to go into deeper side. Then you'll have that the last 2 3 years, depending on how your conjunction of your emotions would have happened. Upar niche, maybe if you had an accident, that'll stay for the last 2 3 years, and that keeps rotating. That keeps cycling in your memory. And the third layer is the last 6 months. That will be a kind of an impulsive structure for you. So these three layers, there is something which is inner core. How did you come out with that kind of delivery, and how did you come out with such a good performance in spite you were not well? I think this is a fantastic point which our prime minister mentioned, that kabhi aram se baith ke sochna. Now this is my question to you: what is that in yourself which is always that inside, that power which always allows you to be the best, not only in sports but any activity you do, right? That's my question. I want an answer from your side. What is that for me? That passion, the love for this sport allows me to every day get up in the morning and talk to myself that I have to do best. I have to take care of my players. I have to take care of my family. I have to take care of the people around me. Whether it is animals, whether it is trees, whether it is climate. These are the things which we live in daily life. We are in this ecosystem. It's very very important for us to take care of them. If we don't take care of trees will not give us oxygen. It's a partnership. So we have a couple of questions here. So before I go to questions, I'll quickly go through the second one, which for Pranay also, he answered it. How did you handle pressure? So he Pranay said very beautifully that when he was playing this quarterfinal match, especially, he knew that for a point that if we lose, we will go home without a medal. But they all had made a pact that chalo bhai is saal hum log medal jeet ke dikhayenge. That Yodha, he mentioned that Modi sir was mentioning that मैं देख रहा हूँ, I'm seeing that you all, maybe you're in sports, but also I'm feeling that you are a warrior inside. That victory, that thing for the victory that I have to win, that zeal, जो ऊर्जा बोलते हैं ना, वो zeal is there for you no matter what. You don't care about your body, what situation it is, but still you go and fight for that. And
That is the thing, my friend. That is the thing, my people, that sport provides you. That's the thing I recommend highly for people. Once in a lifetime, get into sport, get into competitive sport, any level. It doesn't have to be Indian or international level, any level. That is what teaches you a very important lesson in your life. Let's quickly go with the questions. Okay. Says Talaway. Done. One of your videos popped up in my homepage after Thomas Cup. I'm glad. Thank you for the algorithm. Thank you, YouTube. Sarvesh Pandey, sir, what do you think when BI becomes self-sustaining body, in short, a private organization like BCCI, which has no interference of government? I honestly don't have any answer for that. One, this was the exact time in 1983 when BCCI, when we won the Cricket World Cup, and after that 5 to 10 years, there were very smart people who ran the organization and made the sport commercially viable, commercially successful. That's the reason if you see today, even a Ranji player will earn around a crore of rupees. Let's not get deeper into that. I have a separate session planned for that somewhere in future. But there were smart people who really could make a sport into, they say that may bleed blue cricket. I love cricket, that's okay, but they took the sport into such a level that people are just hopping shopping every time when the cricket match happens. Now this, we are also in the same similar situation. I think Gopi sir being vice president, and that could, I think, bring a wonderful situation. We don't know. That's my opinion, but I would not like to get too deep into that. Says Talave, is anyone able to provide some translation or a summary after the clip? Absolutely. Thank you for a good feedback. I will look into that, and maybe I will put a subtitle for that. For the question, I don't think everyone from Indian team speaks Hindi, right? Yeah, because there's an ongoing debate right now. Hindi is not a national language; it's the most spoken language in India, and there are 267 languages officially, and there are more languages sub-officially. Like every language, it has a northern touch, southern touch, eastern touch. Like for example, in Karnataka, we have South Karnataka, we have Eastern Karnataka, and every language comes with a different, accent and fluency and all. But yeah, they don't speak Hindi fluently. Absolutely. So there are many South Indians too. Yes, there are many South Indians, but they are Indians. Sampath Sagar, high time for Indian badminton. Absolutely, Sampath. And Sampath is my bestest friend. Huh? So, yes. Sir, what do you think when BI become okay? That question was already done. Okay, people telling me I can't or not believing I can. Yes. That is the thing which really pumps you up, right? Drives me to prove them wrong. Absolutely, says Talave. Sarvesh, sir, can you please bring anyone from BI administration? I have many questions for them. Oh, yeah, absolutely. Somewhere in the future, I have planned for that. And I'm planning multiple people, not just one. So, kind of a debate where we have where we have a guy from, we have a respected elder from BAI, then we have a reporter, we have a coach. There are many topics which I have been studying and researching because I just don't want to go directly on this. I need to prepare for certain things, because when I make it public, that becomes my responsibility to provide the right kind of content. There is a responsibility for me, so I need to do some research. There are a couple of content, like player economy. How can we build a good player economy so that player has a self-sustained support system even from the age of 18? When these things are happening, I think for parents and coaches, it becomes easy that their things are taken care. There are things like how do we develop the top 50, at least 15 players in each category. There are so many topics like this. How do we inculcate sport as an integral part of education system, not as a curriculum? We have been into sport as a curriculum, at least in my schooling times, but now I think it's a very important time. We are in that cusp, we are on that edge of the time, of the world time, where Indian sporting ecosystem can be one of the massive huge thing in the world.
How big is badminton in India right now? At the casual and club level, I mean. I know it is huge in state and beyond. Yeah. So, Sestalave, this club level, I think, is just a recreational sport. We don't have club competition like the way it is in Europe, or maybe even in Indonesia. I know it's a big sport in Indonesia or maybe Malaysia. The club matches will be really great, but it's not it here. But we have a similar concept like states, state championships, and we have this interstates, and we have zonals where the north, east, west, south, and central zone championships, and then finally we have this Rahmatullah Cup, and there's one more cup for women's. Sir, what's your answer for who after Sindhu in Indian? Absolutely, I think I had promised. I'm very sorry. Don't hate me for that, because I accidentally found out that there are multiple plugins of subjects which needs to be researched, which needs an expert opinion who have gone through the last 30 years of history in badminton. I need to talk to them and then bring up a lot of key points which will really make a difference in my presentation. So that's the reason I've kept it on hold. I have done that research, but it will definitely come. So maybe because I'm here for the long uphaul, baby. I'm not going anywhere. Let's have fun, because this Monday interaction is very, very important for me to also understand that how we develop as an ecosystem. What could be my contribution sitting here at my home in my bedroom, and understand how we can contribute to the entire badminton India, and maybe for the world. What all we can learn, right? So this is my interest, and this is my passion. I hope you will stay with me. So that's a shame. Yes, it's a thing in Europe, leagues between clubs and some club competitions, etc. Do you think that's a missed opportunity? I think more should be done to promote it as a pipeline. I don't think it's a shame. That's the way Indians have developed. And here I would say the state and the zonal systems are much, much stronger, much, much prestigious than the club system, because the clubs are a very small part in India, and I don't think it's a missed opportunity. But we do have club championships for the elderly ones, like above 35. And for me, I think it's okay if it is not there, because I think we are seeing the results in the world badminton. That itself, I think, says that on what trajectory we are. So let's quickly go to the last final one and two video together. See you in a while. कहाँ उन्नति सबसे छोटी है? गुड इवनिंग सर. हाँ, बताइए उन्नति. सर फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ हेयर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे. और सर मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं. हाँ, ये बात. अच्छा, इतनी छोटी आयु में इतने बड़े सीनियर लोगों की टीम में जाना, और तुम्हारी टीम में तो ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, तो क्या आपको मन को क्या लग रहा था? ऐसे ही दब जाती थी? नहीं नहीं, मैं भी बराबर हूँ, क्या लग रहा था? सर इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बॉयज़ की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ, और यूँ भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है. अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर पहली बात तो दूध दही का खाना. उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी. इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगी. बहुत कुछ करना बाकी है. कभी भी चलो यहाँ हुआ है, ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना. बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है, और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है. और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी. और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी. मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं.
बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। Good evening, sir. जी ड्रिजा। As a young player, it's an honor to play for India. The coming years, I will make proud India and get more medals for our country. फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? सर पापा पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, तो ही इज़ ऑलरेडी इन द स्पोर्ट्स, सो ही सपोर्ट करेगा अच्छा से बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले घर पे एक कोर्ट, ही मेड ए कोर्ट देयर, देन घर पे खिलाया। इसके बाद ऐसा नेशनल टूर्नामेंट स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया हाँ आ सकते हैं इंडियन टीम पे ऐसा। तो अभी फैमिली में क्या सबको संतोष है? हाँ सर, है बहुत पिताजी खुश है। तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे, हाँ सर। नाउ इज सेटिस्फाइड? वाह। देखिए टीजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूं देश इससे बहुत ही गौरवान्वित है। और आपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे। ठीक है, आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है, और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया है। और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा। 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा। वो सपना आपने पूरा किया है, छोटा नहीं काम है जी। और जब फाइनल मुकाबले में मैंने जैसा कहा है बात की, और मैं महसूस कर रहा था कि आपको अंदाज ही नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं सचमुच में आपने बहुत बड़ा काम किया है। और अब तो आप भी अनुभव करते रहे होंगे, हाँ यार कुछ करके आए। आप जिन खेलों से जुड़े हुए हो, उसमें जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तब भारत का जो स्पोर्ट का इकोसिस्टम है, स्पोर्ट्स के लिए जो कल्चर में एक नई जोम और उत्साह की आवश्यकता है, जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, जो अच्छे अच्छे कोच नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता के होनहार भाषण भी नहीं कर सकते, वो काम आपके इस विजय ने करके दिखाया है जी। ये ठीक है, उबेर कप में थोड़ा अभी हम और करना बाकी है, इंतजार का उन्नति। Absolutely right. So Unnati was fine, right? So she said, you don't discriminate from the winners and losers. You give them equal motivation and equal presence for both of them. I think that's a great one what she has said. And in fact, she is a 14-year-old who has won a Super 300 Super 100, a Super 300 tournament in India. And she has been almost like, in the top five. She's been beating good players, the top five players in women's category. And she's just 14. And that advice from her prime minister was absolutely on spot, that don't take victory on your head. There is a lot many things to do. Chalte jana hai, which means keep going, and just go on all the time. That's the best advice I have ever heard from any of the people. And there are a lot of things to do. So it was crazy. I really love my prime minister. So, as an example, says Talave, if I were to move to India and want to get involved in competitive badminton, what would be my route? My level is equivalent of high club, low country level here in UK. You're from UK, welcome. So you will have to transfer your the country ID. We call it BAI ID or BWF ID from your country to the Indian Association, and whichever state, sorry, and region you decide or you choose to stay, you will have to go to the local association, which is, I'll just give you an example. If you know a very popular state called Mumbai,
okay, or Bombay, they call it. It's a very popular city in the world. If you choose to go there, it's in a state called Maharashtra, and you will have to you'll have to go and get enrolled in that state, and then from once the accreditation has been done, you will be allowed to play the state level tournaments. And then once the accreditation has been done with our national association, then you can go and play all India tournaments or the national tournaments. So that's the brief way of getting involved in competitive badminton, and we are most welcome. And I think past, I have seen when I was playing, this British player, he was an Indian player. I think he played for Olympics. I'm not getting his name. um, Tos- Rajiv Ausef. If you know who Rajiv Ausef is, so he had done a similar thing, I think, in juniors. Maybe he can guide you well. Sarvesh, yeah, sorry. So Sarvesh, who do you rate higher? Anupama Upadhyay, Tasneem Mir, Unnati Huda, Ashmita Chaliha, and Malvika Bansod. I think rating them one above another, I think it's too early, and I think it would be stupid because I have not completely studied Anupama and Unnati's game yet. I will be doing that very soon. But if I see Tasneem, Ashmita, and Malvika Bansod, all three of them play a very different aspect of the game. Ashmita is more deceptive and more attacking and aggressive. Malvika is completely a rally player. She's very, I would say, neutral defensive, and we can't expect some sort of very heavy attacking kind of game from Malvika, but she has her own style of attacking. And then if we see Tasneem Mir, she's a rally player, and then again, she's a very tricky player. She keeps changing her game style. She keeps, playing different styles of game during the different situations of the game. So I think rating them would be just like comparing apples and oranges. That's what I think. So maybe I'll rephrase the answer once I see Anupama Upadhyay and Unnati Huda. But my answer is something like that. You don't have to be sorry, Sesteleve. I heartily welcome you on the show. Sorry, last question on this. I'll just try your UK accent. Will there be some selection process? Is there any training opportunities, etc.? Definitely, there is a training opportunities. There are many academies, including mine. You can go to my website, mohitkamat.com, and you can check there. And of course, I'm at Instagram as well as Facebook account, so you can check our latest videos on training and achievements, what we have done. And there are a lot of other academies, Prakash Padukone, Gopichand Academy. You can directly email them. I think if the academy allows you for a selection process, then yes. Otherwise, you can directly get into it. Sir, do you also get frustrated with unforced errors of Ashmita like I do? I don't get frustrated. Feedback, include your in every video description. Yes, I'm learning a lot of things. I didn't have a goal to become a YouTuber, but I am finding it really interesting and I'm enjoying this. Slowly I will learn this. That's a great feedback, Sister Leve. Thank you so much. And today I will close the video with the final part of our Prime Minister's monologue, which he had given for 6 minutes. And from there onwards, I will end the show. We will have just 1 minute for thanking each other. I think we have learned a lot from this video today. I have learned a lot of things, especially from the leadership quality of our Prime Minister, that he is giving equal importance not only to the other aspects of our nation but also to the sport. And he also mentioned one critical aspect which I would like to reiterate here, which is the sporting ecosystem. Whatever we are doing today, we are directly or indirectly contributing to the next generation of people of India to the sport. You're winning the tournaments today, you're posting it on your grounds. That is a contribution. You are building as a coach, you're handling so many kids across your academies or in the academy. You're building, don't forget, you're building, you're nurturing, you're shaping the next citizens of our country. So be careful in what you deliver, be careful and be honest in what you coach. And as parents, as well wishers, always try to think one thing:
that support is necessary and positive support is the most. Thank you so much for all for being here. Couple of last questions. What's your prediction for Satvik Chirag top 5 till the end of the year? I think ranking might not be the next goal, but winning more tournaments will be the next goals. Payal Nigamji, very true. Says Talave here. This is my main account. Look forward to more episodes. Absolutely. I think I can have you on my episode one day. So thank you so much, guys. People, I love my country. Bharat Mata ki jai. Let's go with the last video of our Narendra Modi ji, our Prime Minister. Everyone loves our Prime Minister. Thank you so much. Until then, see you the next time, next Monday on the episode 24th. See you. Bye. करेंगे, लेकिन जीतने का इंतजाम भी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इंतजार हमें लंबा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग जाकर के आए हैं ना, आपकी आंखों में मुझे वो जज्बा दिखता है। और हमारी वीमेन टीम ने बार बार ये दिखाया है कि वे कितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, कितने अव्वल दर्जे के एथलीट हैं। और मैं ये बिल्कुल साफ देख रहा हूं दोस्तों, सिर्फ समय की बात है। इस बार नहीं तो अगली बार से ही आप ही लोग विजयी होकर के आने वाले हैं। और जैसा आप सब ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और अपनी आंखों के सामने खेल की दुनिया में भारत का ये उदय, खेल के मैदान से निकला हुआ नौजवान विश्व के मंच पर ताकत दिखा रहा है, तो भारत गर्व से भर जाता है। सफलता की बुलंदी को छूना हर हिंदुस्तानी को गर्व देता है। और इसलिए एक नए आत्मविश्वास के साथ भारत का मिजाज है, यस आई कैन डू इट, ये मिजाज है। और जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैंने मन में तय कर लिया था, इस बार तो हारना नहीं, पीछे हटना नहीं है। ये जो यस वी कैन डू इट जो है ना, ये भारत में एक नई ताकत बन चुका है और आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, सामने प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, कॉम्पिटिटर हमारा कितना ही ताकतवर हो, वो कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के भारत के लिए खुद अपना प्रदर्शन है। मैं ये मानता हूं हमें कहां पहुंचना है, बस यही जज्बा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन साथियों, आप सभी को एक बात और याद रखनी है। अब आप सभी देश की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। देश आपकी तरफ से जरा ज्यादा अपेक्षा से देखेगा, दबाव बढ़ेगा। और दबाव बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन इस दबाव में दब जाना बुरा होता है। हमने दबाव को ऊर्जा में बदलना है, हमारी शक्ति में बदलना है, उससे हमारी प्रोत्साहन मानना चाहिए। कोई कहता है बकअप बकअप बकअप, मतलब ये नहीं कह रहा है कि तुमको दबाव डाल रहा है, वो बकअप बकअप कहता है मतलब कि यार तो और तेज कर सकते हो तुम, करो। उसे हमें हमारा एक शक्ति का स्रोत मानना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप उसको करके दिखाओगे। और बीते कुछ सालों में लगभग हर खेल में भारत के युवाओं का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, और कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ ज्यादा करने का प्रयास हुआ है। उसमें भी बीते 7-8 साल में भारत ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं, हमारे नौजवानों ने परिणाम दिखाया है। ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, रिकॉर्ड प्रदर्शन करने के बाद आज मैं सुबह डेफ ओलंपिक्स के लोगों से मिला, कितना बढ़िया प्रदर्शन करके आए हैं हमारे बच्चे, है ना। बिल्कुल मन को संतोष होता है, आनंद होता है। आज खेल को लेकर पुरानी धारणाएं भी बदल रही है। जैसा आप सबने कहा, माता पिता हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। माता पिता का भी एम्बिशन बन रहा है, हाँ बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो एक नया कल्चर, नया वातावरण हमारे यहाँ बना है। और ये भारत के खेल के इतिहास में मैं समझता हूँ कि स्वर्णिम अध्याय की तरह है, और जिसके रचयिता आप सब हैं, आपकी पीढ़ी के खिलाड़ी हैं, जो आज हिंदुस्तान कोई नई नई जगह पे विजय ध्वज लेकर के आगे बढ़ने के लिए कारण बने हुए हैं। इस मोमेंटम को हमें जारी रखना है बस।
इसमें जरा भी डलने नहीं आने देनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी, हर संभव आपके साथ मदद करेगी, प्रोत्साहन की जहां जरूरत होगी करेगी, बाकी व्यवस्था की जो जो आवश्यकता होगी वो भी पूरा करेगी। और मैं सिर्फ, मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, लेकिन मैं देश भर के खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब हमें रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़ करके दिखना नहीं है, हमने आगे ही देखना है, लक्ष्य तय करके जाना है और विजयी होकर के आना है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।